Well, we will be learning intangible assets now. And we know very well that these are also the non-current assets. Okay. I'll give you a recap in which, you will know that where do these intangible assets stand among the assets category. So just have a look on it, and then we will move forward regarding the accounting for intangible assets. You see over here that we have a broad category assets with us, which are the resources of the entity, and these are further classified into non-current and current assets. All right. Among the non-current assets and current assets, we bifurcate or divide both of them into financial and non-financial assets. Okay, you see here financial and non-financial for non-current, and financial and non-financial for the current assets. All right. Now we come down under this non-financial asset. Under this non-financial asset, we see property, plant, and equipment, which is also the tangible fixed asset. Then intangible assets, then investment properties and other long-term assets, which are non-financial, obviously. So here, under this intangible asset, what we see that there are two categories of intangible assets. One is generated internally, and the second one is purchased externally. So internally and externally is important to understand over here. Okay. And when we say purchased externally, it would be either identifiable or unidentifiable. Okay. And when we say generated internally, it is in fact the asset which comes up with this research and development of the entity regarding a project. Okay. So our main emphasis is under this intangible asset, that there are two categories. One is internally generated, and the second one is purchased externally. Okay. And mainly in this standard, we will be emphasizing, in this standard means in fact we are going to talk about IAS 38. We would be emphasizing on identifiable intangible assets, and this is also the subject matter of IAS 38, which is in fact the research and development cost. So this is in fact the overview of the assets, and what we see that where do we stand as per the accounting for intangible assets. All right. As we see that intangible assets are in fact the non-financial assets. Okay. So what are in fact the non-financial assets? Mainly we categorize it into tangible and intangible assets. You know very well all the fixed assets or property, plant, and equipment, these all are non-financial assets. Okay. And so it's the case with intangible asset, that these, which we will be learning in the upcoming modules, are all non-financial assets. Okay. Well, now the definition of intangible asset is very important to understand. What is this definition? This definition tells us that it is identifiable, number one, non-monetary asset, number two, and the asset with no physical substance. There is no physical substance, without physical substance. Okay. So these are the 3 points that we will keep in our mind, that these intangible assets are identifiable, non-monetary, and no physical existence. What makes it identifiable? Whenever we say कि जी ये asset identifiable है, it means we can separately buy it or sell it or transfer it or lease it or rent it. Okay. Separately आप उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, लीज के लिए. तो ये सेपरेबल होगा, ये आइडेंटिफाइबल एसेट सेपरेबल होगा. ओके. आइदर इंडिविजुअली और किसी और एसेट के साथ मिलाकर. ये बात ध्यान में रखने की है कि आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब है. देन नेक्स्ट कम्स नॉन मॉनिटरी एसेट. जब हम मॉनिटरी को समझ लेंगे तो नॉन मॉनिटरी खुद समझ आ जाएगा ना. तो इसलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा मॉनिटरी एसेट क्या है.
इनफैक्ट जिसमें एक नॉन अमाउंट ऑफ कैश या मनी होल्ड की हुई हो, या वो अपने नॉन अमाउंट ऑफ मनी में कन्वर्ट हो सकता हो. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ कैश in hand, amount of cash at bank, the amount of investments denominated जो आपकी investments के ऊपर face value लिखी हुई है, these all are the monetary assets. ठीक है, तो इसकी definition है these are money held and include all the assets that will be received in a fixed or determinable amount. okay, तो ये आपके हो गए monetary. अब जितने भी intangible assets हैं वो non monetary है, मीन्स उसमें नॉन अमाउंट ऑफ मनी होल्ड नहीं हुई भी. अब इसमें नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट था, 3 पॉइंट हमने देखे थे ना इंटेंजिबल एसेट में, आइडेंटिफाइबल होगा, नॉन मॉनिटरी होगा. नॉन मॉनिटरी के लिए हमने मॉनिटरी को समझ लिया, नॉन मॉनिटरी खुद ही समझ आ गया, और नो फिजिकल सब्सटेंस, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी. अब इंटेंजिबल एसेट जो हैं, बाजुकात इसको मुख्तसर सा मैं आपके साथ जिक्र कर लूं, बाजुकात एक इंटेंजिबल एसेट लाइक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बराबर की वो डीवीडी नहीं है. डीवीडी तो एक इंतहाई मिनिमल अमाउंट की आपको मिल जाती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर रिकॉर्डेड है, जो आप बाय कर रहे हैं, वो एक बड़ी अमाउंट का सॉफ्टवेयर है. तो व्हाट डज इट मीन कि अव्वल तो इंटेंजिबल एसेट फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, एंड इफ इट वुड बी एग्जिस्टिंग, तो जो वो फिजिकल एसेट नजर आ रहा होगा वो उसकी वैल्यू को मैच नहीं कर रहा होगा. ओके, तो ये इसकी नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस होने की बात है कि इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता. तो इंटेंजिबल एसेट्स आर आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विद नो फिजिकल सब्सटेंस. ये डेफिनेशन याद रखिएगा. नेक्स्ट मॉड्यूल में इस डेफिनेशन की बेस पर हम इसकी अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं.